Good morning, students. I am Sumukta from JPPS. Student, today we start exercise 8.1, chapter 8, Introduction of Trigonometry. Student, in previous video, we discussed question 1 of exercise 8.1. Now we start question number 3. Question number 4. Question number 4 is given 15 cot A equal to 8. Student, question 4 given 15 cot A equal to 8. Find the value of sin A and sec A. स्टूडेंट आपके पास 15 cot A इक्वल टू 8 गिवन है एंड आपको sin A एंड sec A की वैल्यू फाइंड करनी है. स्टूडेंट फर्स्ट वी ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल. स्टूडेंट आपने क्या ड्रॉ किया? राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया. नेम ऑफ दिस इज ए बी सी. स्टूडेंट वी गिवन cot A, सो एंगल ए इज नॉट 90 डिग्री. स्टूडेंट आपके पास cot A की वैल्यू गिवन है, सो एंगल ए 90 डिग्री नहीं होगा. सो आपके पास जो एंगल ए होगा वो क्या होगा? एक्यूट होगा. इट मीन्स एंगल ए आपने कंसिडर किया हुआ है एक्यूट ए. फोर एंगल ए बी इज बेस. फोर एंगल ए, ये एंगल ए, फोर एंगल ए बी इज बेस, बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज हाइपोटेनियस. स्टूडेंट फोर एंगल ए बी इज बेस, बी सी इज परपेंडिकुलर एंड ए सी इज हाइपोटेनियस. वी गिवन 15 cot A equal to 8. It means cot A equal to 8 upon 15. Student, we know that LAL upon students, we know that PBP upon H, PBP upon HHB. Here P upon H sin, it means perpendicular upon hypotenuse, sin को डिफाइन करते हैं. बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos, perpendicular upon base tan. सेम हाइपोटेनियस अपॉन perpendicular cosec, hypotenuse upon base sec and base upon perpendicular cot. So student, we given cot A equal to 8 upon 15. It means we given ratio of base and perpendicular. Student, आपके पास cot A given है 8 upon 15. What is the cot? Cot is ratio of base and perpendicular. It means we given ratio of base and perpendicular. Suppose student base is 8k. आपने suppose क्या base क्या आपके पास 8k, perpendicular क्या आपके पास 15k. Base is 8k, perpendicular is 15k. Because ratio are given, so we consider 8k and 15k. Student, AB is base, BC is perpendicular and AC is hypotenuse. We find hypotenuse by Pythagoras theorem. AB square, AC square equal to AB square plus BC square. By Pythagoras theorem, AC square equal to AB square plus BC square. Value of AB is 8k square. Value of BC is 15k square, which is 64k square, which is 225k square. Add of this, which is 289k square. So student, value of AC is square root of 289k square, which is 17k. स्टूडेंट, आपके पास हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या फाइंड किया अपने 17k. नाउ वी फाइंड साइन ए. साइन ए, व्हाट इज साइन ए? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस. व्हाट इज साइन ए? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस. वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 15k, वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूस इज 17k. Can cancel out, so value of sin A is 15 upon 17. Now we find sec A. Student, what is sec A? H upon B. It means hypotenuse upon base. Value of hypotenuse is 17k. Value of base is 8k.
k and can cancel out, which is 17 upon 8. Student, similar we find cos A, tan A, sec A, cosec A and cot A. Student, similar we find all trigonometric ratio of this question. Now student, question number 7. Question 7 is cot theta equal 7 upon 8. Cot theta equal 7 upon 8. Evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Student, we given value of cot theta equal 7 upon 8. Evaluate value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Second part, find value of cot square. स्टूडेंट फर्स्ट वी ड्रॉ ए ट्रायंगल. स्टूडेंट आपने क्या किया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया. एंगल थीटा गिवन है, इट मीन्स एंगल थीटा आपके पास क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा. सपोज दिस इज एंगल थीटा. फॉर एंगल थीटा पी क्यू इज बेस. फॉर एंगल थीटा पी क्यू इज बेस, आर क्यू इज परपेंडिकुलर एंड पी आर इज हाइपोटेनियस. फॉर एंगल थीटा पी क्यू इज बेस, RQ is perpendicular and PR is hypotenuse. We given cot theta. Cot theta is 7 upon 8. Student, we know that cot theta. What is cot theta? Cot theta is B upon P. It means base upon perpendicular. It means student, we given the ratio of base and perpendicular. So student, base. So student, base is 7K. Perpendicular is 8K. Student, so student, base is 7K, perpendicular is 8K. By apply Pythagoras theorem, we know that square of hypotenuse, it means PR square, equal to square of base PQ square plus QR square. So student, PR square PQ 7K square plus 8K square, which is 49K square, which is 64K square. Value of PR is square root of 9 plus 4 13, which is 113K square. So value of PR is square root 113K. Value of P, putting value of PQ, QR, value of PQ is 7K, which is square of 7K, 49K square. Value of QR 8K square, which is 64 square. So square root of PR is square root of 113K square. So value of PR is square root 113 into K. We find value of 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. आपको वैल्यू फाइंड करनी है. वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको साइन थीटा की रिक्वायरमेंट है एंड कॉस थीटा की रिक्वायरमेंट है. सो स्टूडेंट, वी फाइंड साइन थीटा. व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज P upon H. It means perpendicular upon hypotenuse. So sin theta is 8K upon square root 113K. K and K cancel out, which is 8 upon square root 113. Same student, cos theta. What is cos theta? Cos theta is B upon H. It means base upon hypotenuse. Value of base is 7K. Value of hypotenuse is square root 113K. So which is 7 upon square root 113. Now we find the value of 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. Putting all these values, value put करना है आपको. आपने value put किया 1 plus 8. Now putting value of sin theta, which is 8 upon square root 113. 1 minus 8 upon square root 113.
1 plus 7 upon square root 113, 1 minus 7 upon square root 113. Now we find LCM. When we find LCM, square root 113, square root 113 plus 8 as 8, square root 113 minus 8 upon square root 113, square root 113 plus 7, square root 113 minus 7 upon square root 113 into square root 113. Student, this is cancel out. This is cancel out. So we left square root 113 plus 8, 113 minus 8 upon square root 113 plus 7, 113 minus 7. Students, we know that a square minus b square. What is a minus b? A plus b. A square minus b square, a minus b, a plus b, which is square root of 113 square, a plus b, a minus b. Value of a is square root 113. Value of b is 8. So square root 113 minus square minus 8 square, square root 113 square minus 7 square. Simplify this. 1 square आपने square किया, so square and square cancel out. So 113 minus 64, 113 minus 49, 113 minus 64, which is 49, 113 minus 49, which is 64. So answer is 49 upon 64. Now student, in second part we find cot square theta. आपको किसके वैल्यू फाइंड करनी है? cot square theta. So we find cot theta. आप क्या कर सकते हो? सिंपल cot theta फाइंड कर सकते हो. एंड आपने cot थीटा का स्क्वायर किया, सो वी फाइंड cot स्क्वायर थीटा. स्टूडेंट, फॉर सेकंड पार्ट वी फाइंड cot थीटा. आपने क्या करना है? cot थीटा फाइंड करना है एंड आपने cot थीटा की वैल्यू पुट करनी है.